Hello, good evening, everyone. Welcome to crude oil expiry options today. So, as we all know that today is crude oil options expiry, and we would be looking into crude oil options. We would be also taking a look at crude oil charts and would be checking if there is any possible trade in option. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग और सबको वेलकम। आज जैसे आप जानते हैं क्रूड ऑयल का एक्सपायरी है ऑप्शंस का 15th में। तो आज हम देखेंगे क्रूड ऑयल के चार्ट्स एनालाइज करेंगे। अगर कोई पॉसिबल ट्रेड सेटअप हो तो हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। और अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड बन रहा है तो हम लोग क्रूड ऑयल में ऑप्शन ट्रेड भी लेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट्स भी दिखाऊंगा फॉर एनी ट्रेड सेटअप इफ पॉसिबल। हम्म। नो आई थिंक कि मेरा मेरा माई स्क्रीन इज गोइंग ब्लर्ड। मैं उसका ले रही हूँ। ओके, नाउ कैन यू चेक इफ द स्क्रीन इज विजिबल? आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग द स्क्रीन। हो गया है चालू। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट है। फॉर द ये वीकली चार्ट है। सो दिस इज द क्रूड ऑयल वीकली फ्यूचर चार्ट। और जैसे आपने देखा था कि वीकली में ये एक बड़ा पैटर्न ब्रेक हुआ था क्रूड ऑयल में। तो ये पैटर्न ब्रेक होने के बाद एक बार रीटेस्ट हुआ और दोबारा नीचे आया और यहाँ से अभी दोबारा ऊपर आके थोड़ा सा रेजिस्ट हो रहा है। तो अगर हम देख सकते हैं ओवरऑल पैटर्न के हिसाब से, अगर आप देखोगे थोड़ा अगर लंबा व्यू है ये, सिंस ये वीकली चार्ट है तो ये अभी भी निगेटिव है। और रिसेंट उसका जो हाई था अप्रैल का, तो ये था अराउंड 5566। तो ये अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है तो हमारा ये सेल वाला जो व्यू है वो निगेट हो जाएगा। बट जब तक ब्रेक नहीं होता है हम लोग उसको सेल में देख सकते हैं। So as you can see now, this is the crude oil weekly futures chart, and you can see there was a symmetrical triangle breakout. After breaking down, it again bounced back up to retest the resistance, upward sloping resistance line, and again it fell down. And now it is trading sideways. So unless and until if it breaks the resistance of 5566 and it closes above that, it there will be overall there will be a bearish view for the longer period of time, like for the medium term. And we can go for a positional sell as well. Yeah, and looking to the NYMEX crude oil, just a moment. Okay, now this is the NYMEX crude oil future chart. We can see the similar triangle pattern breakdown in it. Again, it went to retest the resistance line, and again it fell down. Again, it went up, but it's still holding the resistance of 64.87. So approximately $65 is the resistance as per the positional trade. Overall, it's in a sell, as you can assume, unless and until it doesn't break and closes above $65. Okay, now coming to the daily chart, you can see this again. Now you can see it has taken a resistance, and it has also taken a resistance of super trend, and was unable to break and close above it, and it fell today. So today we saw a more than 2% this thing a downfall in crude oil futures. So, I'm sorry, more than 3% actually, in NYMEX as well as in M6 crude oil. So,
the daily chart as of now is suggesting a bearish move. We can also check the M6 chart. This is a daily M6 chart. You can see today it opened gap down and it, is moving downward only today. So today you can see it's more than 3% down, M6 crude oil as well. Yeah, however, there is a this thing. If you see super trend, it's indicating negative on the NYMEX crude oil, while it's indicating positive. So you can ignore this and you can, follow the what the NYMEX crude oil is telling you. Since the price discovery happens in US, we are just the price takers. So it's also better to follow the, international charts for crude oil breakouts. Uh, okay, now we can also move to the lower time frame. Let's say we can go for the 2 hour time frame. Okay, now MCX over here in 1 hour and in 2 hour as well. In 1 hour, it is making some positive candles, consistently four positive candles. So it might be reversing from a day low. If we go to the 15-minute chart as well, you can see there might be some reversal coming. But yeah, we have a small resistance over here, which is around 5253. So maybe if it breaks above that, we might take a call option. We can take a position in call option if it breaks above 5253. If it doesn't break, if it holds a resistance, and if it tries to reverse from that, we might take a put option position. So we can also similarly check in live the same crude oil NYMEX futures. The nearest resistance as per the 15-minute chart is at around 60.91. It's quoting somewhere around 60.83 now. So if it breaks and sustains above 60.91 on that, we might, take a call option trade. We can also check if it is, breaking the trend line. Yeah, it has already, but it doesn't show the momentum actually. So I think we should wait to break a previous small for the confirmation to take a buy position. If it is unable to break, we might take a put option, this thing, position. Okay, by the time we can also analyze the option chain, which is readily available on the M6 website, just to, to check where the overall resistance lies, overall support lies. So this is the crude oil option chain. You can go to the option tab on the M6 homepage, and then you can click on option chain. Then you have to select the commodity for which you're looking options. Now, in this case, we are looking at crude oil. So you can select crude oil and 15th May expiry and click on show. So you would be able to see the crude oil option chain. Okay. So see, crude oil on M6 is quoting at around 5245 now, 5240. So if we check it a little bit out of the money strike to check which strike has the maximum open interest to just to check what could be the nearest resistance for the prices. So here you can see this is on the left hand side we have the call option change, and on the right hand side you can see the put option chain. Okay, so on the call side, you can see a 15,290 open interest at 5,300 call option strike. And also, if you can see the second column, which shows the change in open interest. So that also is the maximum is at 5,300 call option. So that makes that 5,300 level the nearest, good resistance for the prices. So unless and I mean, you can also, if anyone wants to take a little bit a longer this thing trade, so you can take a put option unless and until, and you can keep a stop of 5300 as per the futures, and you can take a put option. This thing you can buy put option in crude oil.
on the lower side, if you see, that is on the put side, out of the money, so that is 5,200 put is having the highest open interest build-up, which is 10,337. So the nearest support as of now could be the 5,200, and the nearest resistance will be the 5,300. So we can check if you are able to get any trade. As of now, no, it's still at 5242. Okay. But yeah, and so NYMEX crude oil, we can see that it's not, breaking the 60.91 resistance level. So yeah, we can wait and we can, check the put option by that time. Yeah, we can also check the data. There were multiple economic data that were that just got released, at 6 p.m., 10 minutes back. So the three-star data we can see. Okay, now the one is neutral. Initial jobless claim is neutral. Core retail sale is negative for USD. Uh, Philadelphia Fed Manufacturing Index is positive for USD. Again, PPI is negative for USD. Okay, so basically, if any data is negative for USD, so its indirect correlation is, that is then positive for the commodities. So in this case, again, we can check crude oil is still not able to break the resistance of 60.91 in NYMEX as well. We can check the 5-minute candle for the lower time frame to check if you are able to get any trade. Still no. On the 5-minute, it has just formed a spinning top and it has broke the level of spinning top candle. So, okay, but we need to wait till the candle closes, the current candle closes. If it closes below the previous 5-minute candle, below the low of the previous 5-minute candle, then we might think of, taking a put option position. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5-मिनट चार्ट है नाइमेक्स क्रूड ऑयल का. हम एमसेक्स का भी देख लेते हैं. फिलहाल एमसेक्स में भी क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर के साइड में ही लग रहा है, बट स्टिल ये जो प्रीवियस स्विंग हाई जो था इसका, जो था 5253, ये अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है. तो इन केस अगर ये ब्रेक नहीं करता और रिवर्स होता है तो इसके स्टॉप पे हम लोग एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं. बट हाँ, अगर ये ब्रेक करके अगर ये ऊपर जाता है तो इन दैट केस हम इसमें पुट ऑप्शन ले सकते हैं इसका स्टॉप रख के. वैसे हमने सुबह एक स्ट्रैडल भी सजेस्ट किया था 5300 का. तो अगर वो अभी भी ओपन है, जैसा मैं आपको बता देता हूँ. तो ये स्ट्रैडल जो था ये 5300 स्ट्राइक पे बोला गया था, जिसमें आपको दोनों बाय करना था. सॉरी, दोनों शॉर्ट करना था. 5300 कॉल ऑप्शन सेल करना था और 5300 पुट ऑप्शन सेल करना था. तो दोनों का जो कंबाइन प्रीमियम था वो अराउंड 75 था और उसका स्टॉप लॉस था 150. तो वो कॉल अभी भी ओपन है. वो एक्सपायरी स्प्रेड कॉल था जो मॉर्निंग में दिया गया था. तो अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो उसका कंबाइन प्रीमियम अराउंड 85 है, क्योंकि 5300 पुट अभी 70 चालू है और 5300 कॉल अराउंड 15 रुपए चालू है. तो आप इसमें अभी भी एंट्री कर सकते हैं. अभी इनफैक्ट आपको थोड़ा अच्छा प्राइस मिल रहा है सुबह से. अगर आप शॉर्ट स्ट्रेडल में एंट्री करते हो तो ये 85 है और आपका स्टॉप रहेगा 150 का. तो अराउंड आपका 65 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप रहेगा. और अगर पूरा जीरो हो जाता है तो आपको इनफैक्ट अराउंड 85 रुपीज मिलेगा. तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1 के ऊपर है. So ये ideal रहेगा. So today morning we had suggested a short straddle in crude oil today expiry 15th May. So where we had told to sell 5300 put and 5300 call option. So in this, the combined premium for both was 75 in the morning. We had given a stop of 150. The call is still open, and now you have a very good price to enter. So if anyone has not entered, you can still enter in the short straddle of 5300. The combined premium as of now is around 85-86 rupees. So you can enter the short straddle and your stop loss would be around 150. And if it doesn't move, if it trades in a range, then the combined premium will decrease by end of the day, and you will be you can book your profits.
If we can see the 15-minute candle, it is, still it closed above the previous candle, and the current one is trading at 60.76. The nearest resistance is at 60.91. So if it breaks that, we can take a call. If candle starts reversing, we can think of buying a put. But still, we are not, able to get any good trade. By the time we can analyze some other commodities. Let's say we can start with gold. Yesterday you have seen a very good breakdown of, from the spot gold broke below 3200 levels and it fell till almost 3120 levels. It is bouncing back up, but there is a possibility that you can see it might test the resistance, which was support till yesterday, at around 3200 level. And if it is not able to break the resistance, it might reverse from that, and it might continue its fall again. Similar, it's on the M6 as well. You can see there was a trend line break and it fell, and it is now approaching. It has also filled the gap since it opened gap down today. It might test, which would be around 62,600, 62,500 levels, and then it might again reverse back. Okay, now US oil seems to moving upward only. We can take a risk and take a buy option over here. See, this is the 15-minute chart for the NYMEX crude oil, and this is for the MCX. Since MCX has opened gap down today, so the chart is not, forming good. But yeah, if we check the NYMEX, then there is a distinct slight possibility that it has broken this trend today on intraday basis and it's moving upward. So what we can do is to take a trade, we can take a buy and we can keep a stop of this candle. So if we check the MCX one, we can take at the current level, we can take a buy and we can keep a stop as per future. This is at around 5220. So now let's see which option we should, take a buy. Hmm. So 5,200 call option, which is in the money call option. It's quoting at around 64 rupees, 64.10. So let's see what could be our stop if we take an entry in it. Okay, so this candle over here, this is the 15-minute candle chart, and this candle, which was of 530, the low of that candle on future is 5235. And on the 5,200 call option, if we check the low, so that is around 50.40. So keeping a buffer of 2 rupees, we can keep a stop of 49. Okay, and it is quoting around 63.50, 64. So let's say we take a buy at 64, keeping a stop loss of 49, which is 15 rupees stop, and we can expect a target of 25 rupees. So 64 and 25 is around 89 rupees. So the target would be around 89. We have taken an entry in crude oil 5,200 call option, May expiry, today expiry at 64. And our stop loss is at 49 rupees, which is 15 rupees risk we are having. सो अगेन हम लोग ने 5,200 का जो कॉल है आज के एक्सपायरी का, उस पे 64 पे हमें एंट्री करना है। और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये दो कैंडल पहले का जो लो था, जो था अराउंड 50.40, तो हम लोग 49 का इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और हम लोग अराउंड 89 रुपीज का जो है वो अराउंड 90 रुपीज का हम लोग इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस को भी अप्रोच हो रहा है, तो इन केस अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट आएगा। बट ये भी जो सेटअप फिलहाल फॉर्म हुआ है, इसके बेस पे भी अगर आप देखोगे एक छोटा सा ये कंसोलिडेशन था, एक अराउंड दोपहर से 3 बजे से थोड़ा अप ट्रेंड में है क्रूड ऑयल, और ये जस्ट एक अच्छा लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया है क्रूड ऑयल ने।
सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद ये मोमेंटम ये कंटिन्यू करेगा। हाँ, हालांकि अगर फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो 5247 अभी चालू है, स्टॉप हमारा अराउंड 5220 का रहेगा ये कॉल के हिसाब से। और देखते हैं हम अगर 5 एक मिनट रुक के ये हमारा ट्रेड कैसा होता है। हम लोग ने 64 पे एंट्री किया है, करंटली अराउंड 63.60 चालू है। जिन्होंने जिन्होंने एंट्री नहीं किया है वो अभी भी एंट्री कर सकते हैं, स्टिल वो हमारे प्राइस रेंज में ही है। स्टॉप हमें इसका रखना है 49 रुपीज, 49 रुपया, और हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 90 रुपीज का, 90 रुपए का। तब तक हम दूसरे कोई चार्ट देख लेते हैं अगर जिसमें हमें कुछ सेटअप दिख रहा है। ओके, गोल्ड में अगर आप देखोगे ये स्पॉट गोल्ड है, तो इसमें 15 मिनट्स पे एक अराउंड शूटिंग स्टार बनाया है। और कल की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये आके रुका है। ये सब इसके रेजिस्टेंस जोन है, 3190 से लेके अराउंड 3200 तक। तो ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। पॉसिबल है कि अगर ये नीचे ब्रेक होता है और अगर आपको एंट्री करना है तो एक छोटा सा ये लास्ट टाइम का जो इसका लो है, ये है अराउंड 3172, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा सेल ट्रेड बन सकता है गोल्ड में भी। सिल्वर भी रिकवर हुआ था, बट स्टिल अगेन अगर आप देख पाओगे कि ये कल की जो आसपास जो रेजिस्टेंस है वहां से ये घूम रहा है स्पॉट में। इवन ऑन M6 इफ अगर आप चेक कर सकते हो तो कल का जहां से ब्रेक डाउन हुआ था, जहां से सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है, हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, ये गैप फिल करने के लिए भी ऊपर आ गया है कल के रेजिस्टेंस के यहाँ पे। ये फिर से अभी थोड़ा सा नीचे का इसमें लग रहा है। अगर आप 15 मिनट चार्ट देखोगे इसमें, तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये जो कैंडल है 94,860 का, ये अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा सेल ट्रेड बन सकता है। आप स्टॉप ये कैंडल का हाई जो है विच इज 95,320, तो ये आप लगा सकते हो इसमें अराउंड आपका 450 पौने 500 का स्टॉप रहेगा। और आप 1:1.5 या 1:2 भी इसमें टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसा अभी हम लोग दोबारा आते हैं क्रूड ऑयल की तरह, और आप देख सकते हो ये 15 मिनट का कैंडल जो हम लोग ने चार्ट है 15 मिनट कैंडल्स का, तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस था, हम लोग थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 5 मिनट के। देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है मूव, जैसे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। ये जैसा रेजिस्टेंस था 5253 का, उसने जस्ट अभी हाई मारा है 5255 का, और क्रूड ऑयल ऑप्शन ऊपर ही जा रहा है। तो आई थिंक ये अपना शायद ट्रेड ये अच्छा चला जाएगा। जो ट्रेड हमने 64 पे बाय किया था, वो अभी अराउंड 68 रुपीज चालू है, 68.30। तो ये ऑलरेडी 5 रुपीज अपने फेवर में आ चुका है। इसे हम होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें सेम मेंटेन रखना है 49 का। नाइमेक्स में भी अगर हम देखें तो जो प्रीवियस स्विंग का जो रेजिस्टेंस था 60.91, उसको जस्ट टच किया है। 60.92 जस्ट एक स्पाइक मारा है, बट 60.91 के ऊपर एक हाथ 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो ये अच्छा कंफर्मेशन रहेगा। क्योंकि जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक हम उसको एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो इट हैज टू क्लोज अबाउट 60.91 एज पर डायनामिक्स एज वेल। वैसे M6 में तो ये शायद 5253 के ऊपर मार तो दिया है, बट ये क्लोज नहीं हुआ है, 5255 तक गया है। अगेन ये डे हाई पे चालू है। वैसे ये जो छोटे ट्रेड्स हम लेते हैं ये हमें 3-4 कैंडल तक ही रुकना है, 15 मिनट्स के या 5 मिनट्स के। जैसे आप आधा घंटा या पौने घंटे तक अगर आपका ये आता नहीं है तो आप इसको फटाक से जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको आप एग्जिट भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें काफी छोटा टाइम फ्रेम पे लिया है हमने, एक छोटा सा मोमेंटम कैच करने के लिए। क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है क्रूड ऑयल काफी एक्सपायरी पे वोलेटाइल भी होता है ऑप्शंस, और जैसे कि आज बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा है तो ये फटाक से रिवर्स भी हो सकता है। अभी मैं देख सकता हूँ कि हमने जो 5200 का कॉल जो बाय किया था 64 पे, ये अराउंड 70 रुपीज इसने टच किया है। 70.40 का जस्ट इसने हाई मारा है। फ्यूचर्स भी आप देख सकते हो 5256 पे सस्टेंड है आज का, अभी जो दिख रहा है ये कैंडल के हाई के आसपास। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये ऊपर की तरफ जाने के थोड़े इंडिकेशंस दिखा रहा है।
ओके, तो अभी ये ट्रेड तो फिलहाल ओपन है। आप नेक्स्ट 15-20 मिनट्स के लिए ये ट्रेड ओपन रख सकते हो। और इसको आपको क्लोजली वॉच करना है। आप ये तो धीरे धीरे अगर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में लेट्स से अगर ये आपका नहीं आ रहा है टारगेट, लेट्स से आप 7 बजे तक वेट कीजिए। 7 बजे तक अगर और इसमें मूव नहीं हो रहा है, ये साइडवेज हो गया और इसके ऊपर अगर क्लोज नहीं हो रहा है, बेटर है जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसको बुक करके आप एग्जिट कर लीजिए। फिलहाल ये अपना तो प्रॉफिट में ही है कॉल, बट यू कैन एज ऑफ नाउ द कॉल इज इन प्रॉफिट विच वी हैव टेकन अ बाय एट 64। You can wait till next half an hour. If the momentum doesn't follow or if it doesn't continue on the upside, and if it is not able to, close above the swing had the resistance which I've mentioned, then you can exit your positions. As of now, the call is in our favor because we have taken a buy position at 64, and currently the 5,200 call is quoting at around 68 rupees. Okay. So yeah, that's all from my side for this option expiry. If you have any questions to ask regarding the option chain or anything else regarding the option expiry or crude oil, feel free to ask. We can start the question answer session. Uh, Okay, someone is asking, can we buy crude oil 5110 call option? Yeah, see, if your view is positive, if your view is bullish, then of course you can buy any call option. But yes, you have to, mention the stop loss. You have to keep a strict stop loss. So whatever the stop loss that I told you, like go three candles back, whatever the low of that candle was, you can see the option chart for 5100 call option, and accordingly you can place a stop and you can expect a 1 is to 1.5 or 1 is to 2 target for the same. Acha, there is a question why there is a difference here on spot and M6 value percentage wise. Okay, a very good question. जैसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि M6 और स्पॉट में परसेंटेज में डिफरेंस क्यों है। तो जैसे कि आपको पता है कि M6 का जो मार्केट है वो 11:30 बजे बंद होता है, और जो बाहर जो हमारा नाइमेक्स जो क्रूड ऑयल है, WTI क्रूड ऑयल है, वो रात को बंद होता है 1-1:30 बजे के बाद। तो वो जो डिफरेंस है, तो हम जो M6 का क्लोजिंग लेते हैं प्लस माइनस कितना हुआ, वो 11:30 के क्लोजिंग के हिसाब से लेते हैं। सॉरी, बट बाहर का जो मार्केट है वो जो रात को लेट बंद होता है, तो वो रेट से वो क्लोजिंग और लेता है, उसकी वजह से वो डिफरेंस आता है प्लस माइनस में। सो व्हाई देर इज अ डिफरेंस इन परसेंटेज इन नाइमेक्स एंड M6 क्रूड ऑयल, बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग टाइमिंग. The M6 market closes at 11:30, while the NYMEX crude oil, closes after 1:30. So because of which the closing price is taken at what the market is closing, and as per the plus minus, whether it's positive or negative, the percentage differs. Someone is asking, is crude oil option expiry today or on 23rd May? Uh, for the May contract, the option would be expiring today, as we are conducting the option expiry session. So yes, today is the crude oil May option expiry, which is 15th May. Any other there are some questions regarding what is the, natural gas, this thing view, or what is the copper view, for which I think you can follow our Telegram channel as well.
where you would be getting some insights, some news, some charticles. Or else, if you want some assistance, you can call our dealing team for any view that you want. Since this webinar is for the crude oil options expiry, majorly we would be discussing crude oil view and crude oil prices. Any other questions, if anyone is having? Okay, I don't think there are any more this thing. Okay, just now I saw, let me check. I think there's a very good spike. Oh, wow. If you check the crude oil future prices, it just, registered the high of 5297 in futures. And you can see the 6200 call option, sorry, 5200 call option that we suggested. It made a high of 103. So 103. So a very good news. I mean, if anyone would have taken a buy call in 5200 call option, our target was 90 and we took a buy position at 64 rupees, keeping a stop loss of 49. And currently it is trading at around 88, 90 rupees. Again, it has met our target. So if anyone has still open position as per our session, you can book your profits at 93 rupees. It just made a high of 103.50. So it is more than 1:2 trade. So that was a very good trade, guys. I hope most of you who have, attended this session have taken this call option on our live webinar. Hope you trade well. You can follow our calls as well on our Telegram channel. Thank you everyone for joining our today's session and good luck to everyone. Safe trading.